ended. I did it Hi. twice. That was quick. That was really quick. You want to watch it? Okay, that's more like it. Yeah, that's better. My Our branding is whole important. situation here, I know, like my whole situation here is very delayed. So like I'm clicking on stuff, but it's not showing up, and then I click it again, and then that nonsense happens. So You probably need to update like the software. actually, I like haven't updated, the software updates that come on, for Mac and Yeah. stuff. I haven't updated the iOS system in so long. Mine's automatic. No, I don't need to worry. it usually comes up when we're like live or we're recording, and I'm like, remind me in a week, remind me in a week, and I Mine's just never do automatic. It it. just happens, so I have no I tension. know. I need to do that because I think that's why my laptop is like fucked up. Yeah. Okay. Anyways, Anyway. welcome guys, whoever's there. Hi everybody. Guys. How do you like our little logo up there? Kirti says it looks fabulous. It looks good. I Yeah, love it. we Especially the literally took it from the says, just the says, the A looks fab. Yeah, I hope people know that that's an A. Yeah. No, but like it's on the YouTube page, तो हमने सोचा वहां से इधर ले आते हैं क्योंकि हमारी वीडियोस आजकल ना बहुत फैल रही हैं पूरे ट्विटर Yeah. पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा थोड़ा हमारा नाम ऊपर आ जाए तो अच्छा होगा ना, क्योंकि Yeah. लोगों ने And तो if हमें क्रेडिट देना नहीं है, तो हम खुद ही अपने आप को क्रेडिट दे रहे शुरू से ही. Yeah. So if guys want to pillow the video, make sure you pillow it with says. Yes, That's very important. Make sure. And Kirti says, fam, if you guys see our video anywhere, tag that shit. Yeah. If people want to say, make sure they put Kirti says, because that is what the one that only, this is what only says. Nothing else can say. Yes. Ricky, hi. Yes, I missed y'all yesterday. Did you really? It's been a few days. Ricky, I missed you too, man. Thank you so much for coming. Yeah. लेकिन comment तो किया नहीं कि कीर्ति I missed you, तू आजा, या किया था? मैं भूल गई. DM किया, check करो, DM नहीं किया. Ricky, तेरा DM नहीं आया मुझे. Yeah. H to the Bizza, absolutely. Should be proud of all good movies for different reasons. To me, the 3D and VFX in Brahmastra at that level was extremely good. 100%. Definitely, no doubt. Was in love with the graphics. I watched it in IMAX 3D and I loved it because the graphics were insane. Money well spent. First time ever मुझे कोई Indian product में VFX अच्छे लगे. नहीं तो हमेशा बकवास होते हैं. Case in point, this year, शमशेरा, वो कितना बकवास था, वो graphics का situation. Don't even talk about that. I was like, oh, एक तो movie stupid है, एक graphics stupid है, तो कुछ भी नहीं बंदा देख सकता. इस movie में, guys, I have to tell you, I like have grown up with, Marvel and, like Transformers, like graphics galore. And I have to say, this rivaled that. 3D में, if you can, 3D theater ढूंढो, 3D में ये movie देखो. It's fantastic. The graphics are. I absolutely loved it. Obviously, for us over here, they don't do as many shows in 3D anymore. Like I have to travel like 50 miles just for 3D. That's okay. So travel करके देखो. I know. I wish I could have, but obviously I had work and stuff and everything happening, and then obviously I had to come back for live as well. So I had a lot going on, so I couldn't watch it. But I watched it on super screen and I loved it. I think the visual effects were amazing. It was. I just want to say, Ayan Mukherjee has done such an amazing job. He's made like India proud of the example that he set. Like, wow, it's a good stepping stone for him, for sure. I love the graphics. Keep it up. Ajay Swifty, I mean, there are newspaper articles busting their collections. Who's going to believe that? Busting what? Zyada ki kam. I don't understand what this comment means. Yeah. Hey, how's it going? Surinder Kaur, hello everyone. कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं. आप सुनाओ, आप कैसी हैं? सत श्री अकाल Surinder Kaur ji. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल Odi. सत श्री अकाल Odi. Padharo. Oh shit! Oh my God, Junoon. Wow. Junoon shock. Whatever. Junoon is here. Pranam karo Junoon ko. Junoon गिर गई Junoon. Junoon गिर गई. Junoon, ये क्या दिखा रहे हो हमें?
जुनून गिरी जनून जनूनी जुनून का होके जुनून गायब हो गई. खत्म. हाय इंदू. Hi Indu ji, how are जुनून का you? जुनून खत्म हो गया. Happy Friday. Happy Happy Friday. इंदु कंडोला. एक सेकंड जुनून. इंदु कंडोला is going for a camping. मैंने एक बार Wow. कैंपिंग की है लाइफ में. इंदु प्लीज Wow. मैं भी कैंपिंग जाना चाहती हूँ. Okay जुनून, how are you doing? ये जो ऑडियंस है इस ब्रह्मांड की कीर्ति, तुम्हारा कीर्ति फैन इस जनून की ताब नहीं लाएगा. ये रफ्तार की गत को रोक सकते हैं, जोर को तोड़ सकते हैं, लेकिन जनून की दीवानगी का मुकाबला कैसे करेंगे जुनून का जुनून नहीं तोड़ सकते क्या? साइंटिस्ट साहब? ये जुनून है तो मुझे साइंटिस्ट बन के आना पड़ा. ये क्या है? जुनून गिरी जा रही है. Junoon, just for you, I had to become scientist. देखा जुनून का जुनून प्यार ने तोड़ दिया ना. कीर्ति का प्यार गाइस. Wow, what the hell happened to Junoon? Hey Neha. Hi Harish. Hi Kirti. Hi. Who is Harish? Hi Junoon's Pooja. busted right You're now. looking pretty. Thank you. यहाँ जुनून आई है ना चुड़ैल, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा अच्छी दिखूं, मैं थोड़ा like आलिया vibes लेके आऊं, positive लेके आऊं, ये colorful flowers पहनूं, तो Yeah. यही था मेरा. Hi my darlings. Junoon, you're gonna scare I me. look like Bipasha. Why do I look like? Why am I looking like Bipasha? You are Well, looking it's hella because- scary, man. Odie, Thank you I should have know. worn red. You should have worn red contacts. Yeah, right. Get me those red contacts, please. तो पहले बताना चाहिए था तू जुनून बन के आ रही है, वरना मैं तुझे बेच देता. मेरा ख्याल से मैंने हफ्ता पहले बता दिया था. तुझे याद नहीं रहता तुझे We काम weren't बहुत है. sure ना 100% if you're gonna actually turn up. Naveen. Oh, अच्छा तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो थोड़ी second लिए. Okay. Naveen. Hello YouTube के Astro. How are you? Where is your Brahmastra? My Brahmastra is in the comments already. Called Yeah. Tino. What about your guys' Brahmastra? Who is your Brahmastra? Like seriously, Odie, you are looking really scary right now. My Brahmastra is obviously you, Kirti. Oh, yay. Yeah. For sure. You're my Brahmastra. Junoon is the Maha Brahmastra. मैं तो अंधेरे की पुजारी हूँ. मुझे रोशनी चाहिए. मैं तो मैं तो Well, मैं part तो 2, part 3 bhi aane, so you never know. There might be a Maha one, so it might go on. Asha saying Brahmastra doing good business. Yes, you Yeah. guys. Ek week mein worldwide 300 crores. Like get that Wow. money. And log keh rahe hain ki nahi unhone itna paisa kharcha abhi hit nahi hai. यार एक हफ्ते में 300 crores कमा लिया worldwide तो और तो हाई जाएगा ना ये. I'm That's really insane. happy. I love it. I love when movies do well. So that's really good. And I love when the haters are choop, because choop, Yeah. it has 300 crores in the bank and it's going to be racking up more money. So choop. Okay. Yeah. That's enough. I love it when haters ko mirchi lagti hai. मुझे भी. Yeah. Thank Love you, the Neha. logo, Kirti. Okay, what do you think about the collection so far? What do you think? आई थिंक कि इसको और कलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इट्स हाई टाइम कि वी शुड सेलिब्रेट बॉलीवुड इंस्टेड ऑफ बॉयकॉटिंग बॉलीवुड. ये एक ऐसी फिल्म आई है इन द रीसेंट टाइम जो आप फैमिली के साथ दे सकते हैं. Yeah. इसको अगर मैं छोड़ दूं एक अच्छी आप फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, आप जरूर जाके देख सकते हैं कि जहाँ पे बच्चे जाके एंजॉय कर सकते हैं, जो यंगस्टर्स है वो बहुत एंजॉय कर सकते हैं. क्योंकि अगर माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर इतनी अच्छी स्पेक्टेकल उन्होंने दी है, इतने अच्छे वीएफएक्स डाले, इतनी अच्छी एक स्टोरी क्रिएटिंग की है. आई रेड दिस कमेंट इन द बिगनिंग, समबडी रोट कि जी व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द फिल्म. फैंटेसी फिल्म्स में लॉजिक नहीं होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. एक स्टोरी टेलिंग की जाती है, एक फैंटेसी क्रिएट की जाती है, वहां पे थ्योरीज मैटर करती है, वहां पे फिर लॉजिक तो कोई मैटर नहीं करती है. आप कोई भी फैंटेसी फिल्म उठा के देख लें, पीपल वर सेइंग जी आरआरआर एंड ऑल दैट, तो आरआरआर के अंदर भी आपको बिलीफ सस्पेंड करना पड़ता ही है. एज फार एज ब्रह्मास्त्र इज कंसर्न्ड, आई थिंक द वेट इज वर्थ अ व्हाइल, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से अगर ये फिल्म पोस्टपोन होती है, सो दैट ओ गॉड व्हाट हैज रिटन Junoon, your Dev is in Peshawar. Darling Dev,
वो रणवीर सिंह है, तुम तो चल रोजे हो पेशावर के, तो मैं तो बच्ची को खा पर जाऊंगी। ओडी can I Wow. say मैं भी 100% agree करती हूँ। अगर लोग सोच रहे हैं कि लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक मुझे ये बताओ, जब आप सब मार्वल्स की मूवी देखते हैं जाके, या डीसी की मूवीज देखते हैं जाके, वहां भी आप लॉजिक की किताब लेके जाते हो आपके साथ? वहां भी आप सोचते हो कि क्या लव स्टोरी चल रही है, क्या नहीं चल रही? अगर आप मार्वल को इतनी लीवे दे सकते हो, राइट, why can't you give leeway to your own superhero film from India? I don't understand. इतनी hate खुद के इंडस्ट्री के साथ, खुद के like Indian product के साथ इतना hate क्यों है? I don't understand. I think it should be celebrated. I think you're right. Kids can go watch it. It's an entertaining film for kids. I'm not a kid, obviously, but I love superhero movies. I'm a big Marvel fan. I'm a big DC Comics fan. बचपन से मैं cartoons देखती आई हूँ, X-Men, Spider-Man, Batman. I've watched everything. So, and I've watched every single movie of this. So yahan, I'm really happy that now India is going to come out with a trilogy itself, right? And log kehte hain ki it can never match Avengers. I'm like, hello, Avengers ko bhi 15-20 saal lag gaye. You know what I mean? Yeah. 15 movies, 20 movies jo bhi hai. So this is going to take time as well. Why is everyone so gung ho to rip their own films apart? I don't understand. Like, celebrate stuff that's happening for once. Yeah. कीर्ति, ये तो क्या नाम है ही बड़े पर्दे की फिल्म। हैरिस इज सो लकी, यू आर सो लकी, पीपल इन इंडिया राइट नाउ आर सो लकी दैट दे हैव द चांस टू विटनेस द ग्रेटनेस एंड मेजेस्टी ऑफ दिस शेयर ब्रिलियंस। यहाँ पे आई हैव सीन क्या नाम है, वो भी पायरेटेड वर्जन के अंदर इन बिग सिनेमा हॉल, जो एक फ्रेंड का है जो रिलीज कर देता है। लेकिन बात तो वही है कि वीएफएक्स का तो फायदा तभी है जब आप आई मैक्स के अंदर देख सकें। और मुझे देखने से पता चल रहा था कि ये एक्सपीरियंस लेने वाला है। अगर इस लेवल के ऊपर, इस स्केल के ऊपर वो पैसा लगाते तो नजर तो आपको आ रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अगर मैं बात करूं ना कि ये जो चलता है इस चीज को लेके, क्योंकि पोलराइजिंग। This is related to you, Odie. Okay, Pankaj is saying, guys, let's be realistic. Brahmastra isn't blockbuster even hit yet. It needs to earn 400 crore in India gross to be hit. It has earned only 180. Why does it only need to earn in India 300? It's or 400. It's earned 300 worldwide so far. So why Yeah. does it only need Pankaj, 400 in what's the India? name? What's the name? Pankaj. Pankaj Mahajan. Pankaj Mahajan, I have a question for you. Please write to me. आप कहते हो कि इंडिया के अंदर इसको 400 करोड़ से ऊपर करना है, क्योंकि शायद बाहर की कॉस्ट लगा के क्या, मतलब कॉस्ट तो उतनी है जितनी लग गई, वो चाहे Yeah. डिस्ट्रीब्यूशन की हो चाहे जो, वो कॉस्ट दे हैव बोर्न इट। तो अब वो वहां से क्या नाम है पैसा कमा के लेके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब बाहुबली 1 एंड 2 आई थी, उन्होंने इंडिया से ज्यादा बिजनेस चाइना में कर लिया था। दंगल ने इंडिया में से ज्यादा बिजनेस चाइना से कर लिया था। तो आप ये बात नहीं कर सकते कि जी इंडिया में ही सक्सेसफुल होना जरूरी है। और अगर इतना जरूरी है पंकज, ठीक है महाजन, तो प्लीज गो फॉर इट, जाके देखें, फैमिली को दिखाएं। ये एक हाई टाइम है जहां पे आप एंजॉय कर सकते हैं उस कल्चर को, उस सिनेमा को, क्योंकि आई बिलीव बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा या इंडियन सिनेमा हैज बीन पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ हिंदुस्तान एंड इंडिया। और उसकी खूबसूरती ये है कि इट रीचेज आउट टू अक्रॉस द ग्लोब। पाकिस्तान के अंदर जितना क्रेज है इंडियन मूवीज का या बाहर है, वो तो आप लोगों को शायद आइडिया है ही नहीं है। Okay, so Harris and I live obviously outside of India. Obviously you do too. लेकिन वो तो सिर्फ देसी community है ना. We live in countries where obviously we are a stark minority. And let me Yeah. just tell you, जब से ये globalization हुआ है of the internet, social media, Netflix, Hulu, Amazon is there. Indian content is doing really well even with non-Indian people. So even here, जब ऋतिक रोशन आया था नया सीन पे, या अर्जुन रावपाल आया था, obviously I was like, oh man, these are some hot guys. And I used to show my best friend, she's African American, हिंदी का H भी नहीं जानती, वो सबटाइटल से देखती थी कि oh my god, Indian movies are really cool, really pretty. And तब वो trash movies होती थी, like दिल है तुम्हारा, okay? तब भी उसने कहा कि wow, I want to watch it, okay? तो वहां से अगर थोड़ा grow हुआ है, realistic cinema आ रहा है, हालांकि Brahmastra it's not realistic, it's fantasy. If it's doing that stuff, and if American people are watching it and liking it, why in the hell is the Indian audience having such a hard time with it? I don't नहीं, get it. एंड आई एग्री Definitely. टू कॉल मी स्पाइडी। ये जो उन्होंने लिखा है डायलॉग्स आर ट्रैश, मैक्सिमम डायलॉग्स आर ट्रैश, स्क्रीन प्ले इज नॉट बैड,
writing, as far as only dialogues are concerned, the written stuff, Hussain Dalal ko definitely, I have this complaint, jahan Yes. pe कुछ जगहों पे I felt like कि it's not even necessary that गुरु हो गए शुरू हो, या this Shiva Shiva Shiva, how much Oh my God, Alia has done कितनी बार Shiva. उसने शिवा कहा है इस पूरी Yeah. मूवी में. I was like कुछ और कह दे, शिवा शिवा शिवा. I was like okay, ये तो पूरा भूल जाओ. I have to say, Hussein Dalal, what kind of amazing dialogue writer is he? He's not. Yeah. क्योंकि हर एक मूवी में जिस मूवी में इसने dialogues दिए हैं, they've been kind of cringy, if you ask me. जहां तक dialogues की बात है and screenplay की बात है, obviously Ayan Mukherjee's first language is not Hindi. वो पूरी script English में लिखता है. And then a translator comes when it goes on floor. So from English to Hindi, if they're doing literal translation, it's gonna sound shit. Like in English, it would be like hold on, I wrote it down somewhere. I don't burn from fire, right? That's the English way to say it. And when we were reading the subtitles out here in the theater, it didn't seem weird. English में सब सही बैठ रहा था, हिंदी में weird सुन रहा था. Like, it was Yeah. really weird. So I think literal translations तो लेनी नहीं चाहिए. And if they're taking Ayan Mukherjee's script and dialogues and translating it into Hindi, then don't do literal translations. Make it sound right. It's just like जब आप हिंदी poem या शायरी को आप English में translate करते हो, you can't do word to word translation. It sounds stupid. Does that make sense? Like Yeah, what I'm trying to say? 100%, 100%. Yeah. Because even when you go on Google and you put like something in Arabic, Persian, whatever, when you translate it, when it comes to the English format, it sounds absolutely like ridiculous. Like, what the hell is going on? So obviously, when you do it word to word, it's not right. You have to translate it according to how people want to hear it, not according to how literature is. So I think that's where they make the mistake. Is for just a script में फिर अच्छा नहीं लगता. Kanishk Yeah, बोलो. so I'm loving these comments that are saying कि Ayan sub dialogues पे जो criticism आ रही है, he's saying that he's gonna incorporate it in the next one, and I also agree with this. Kanishk is saying that they wrote the dialogues catering to the young audience, but Ayan said he will take the criticism positively and improve everything in second part. That's the point. You're supposed to Yeah. take criticism and apply constructive criticism and apply it, right? So that makes sense to me. And मुझे भी लगता है कि जो उन्होंने beginning दिखाया था ना कि ऋषि मुनि थे कैसे देव अस्त्र आए and all of this I happened, love I it. loved it because they were setting the whole story. फिर मुझे लगता है when they got to 2020 or 2022 जो भी उनका present day चल रहा है, it was a little bit weird to hear them talk like that. लेकिन फिर Yeah. मैं कहना चाहती हूँ maybe जो ब्रह्मांश के थे वो, so they were a different group altogether and they talked like that amongst each other. So maybe they did that, but yes, it was hella cringy. We don't need that. And then there's also criticism, like Odie and I were talking कि spoon feeding बहुत हो रही थी कि वो बंदा तेज घूम रहा है तो शाहरुख ने उसको कह दिया हाँ तू तेज दौड़ता है तो तू रफ्तार है, ओ तू इतना ताकतवर है तो तू क्या था उसका नाम Zor. जोर है. So I'm like, okay, they're doing really a lot of spoon feeding. And then मोनी रॉय आके कहती है तूने रफ्तार को हरा दिया या जोर को हरा दिया पर जुनून को कैसे हराओगे, मैं तो जुनून हूँ. I was like, okay girl, but No, Preeti, I just मेरा feel like ये थोड़ी जो इसमें spoon feeding होती है, I understand they're trying to establish a world, they're trying to set a foundation. क्योंकि अगर आप early Avengers movies भी देखो before Infinity War and all of this happened, they were doing a lot of spoon feeding in there too. Like Yeah. let you introduce you into the world. So I get that. Like, and yes, the dialogues were cringy and Shiva 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 itna Shiva ho gaya tha, and it was just whack. What do you think? नहीं अच्छा okay, Haris go. Odie, huh? Yeah, so definitely I agree the dialogues were definitely cringe for sure. Like you just said, obviously, all the dialogues, this Junoon, this Zor, Daftar, I think obviously there was no need for it. You could have worded it in a different way that it's relatable or it's understandable because obviously kids like, superhero movies. So Mhm. do something that's obviously fun, entertaining, but don't make it sound stupid or pathetic. So I agree the dialogues were definitely cringe. For me, the highlight was definitely the VFX for sure. I was amazed. And I just want to say, okay, when this promo came out, and I was obviously feeling, okay, you know what, it might not do well because looking at the history, like Shamshera and Ek Villain and all these movies, I thought shayad bakwas movie hogi, waste of money, there's no point going. But now I was like, you know what, it's made with so much love, and it's going to be the first movie that's obviously
a Marvel representative. जाके देखो, see how it will Yeah, I maybe loved change it. his perspective. Yeah. So I went and I was surprised. I was like, wow. Yeah, Like, and Harris मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैंने ये 3D में देखी है. तो when I was sitting there, I literally felt I was in their world. जैसे वो colors yeah. आ रहे थे, graphics आ रहे थे. It was a beautiful spectacle, at least for me. Before we Yeah. get to the comment, Odie, what do you have to say? Then we'll answer this comment. या एक तो ये जो राइटिंग की बात चल रही है कनिष्क के बाद से आई डू अग्री कि वो जब वो बात करते हैं कि आज की ऑडियंस को लेके मतलब मैं क्रिंज जो एक दो चीजें मुझे लगी डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड लेकिन कीर्ति लाइक वी मेंशन कि जी स्पून फीडिंग लगती है पर्टिकुलरली वो सीन मुझे स्पून फीडिंग नहीं लगता जहां पे वो जोर की बात करता है और वो उसको कहता है कि हाथी की ताकत गैंडे की ताकत वाई क्योंकि मे बी वो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे Yeah, they're वो setting पहला up. सीन था जहां या तो वो सेटअप कर रहे थे ताकि आपको अंडरस्टैंड किया जा सके डेफिनेटली बैक स्टोरी तो दिखानी नहीं है लेकिन जब बात की जाती है जी के पंच लाइंस तो होने लगी ऐसी फिल्मों में पंच लाइंस नहीं होती है सो आई एम नॉट Yeah. गोइंग टू एक्सपेक्ट कि जी पद्मावत के हैवी डायलॉग बाजी होगी या क्या नाम है बाजी और मस्तानी का कोई बहुत हैवी मटेरियल आएगा नहीं था और वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता लेकिन मुझे कहाँ राइटिंग में प्रॉब्लम है लाइक दिस लाइट वो रोशनी है जो अंधेरों से सब कुछ हटा देती है सो आई एम लाइक लाइट ही वो रोशनी है तो इसको किस तरीके से आप बोल रहे हैं वो बड़ा मैटर करता है छोटा कर दे Yeah. बात को समझ में आ सके आप इतना बचकानापन नहीं करते एंड दैट टू अगर आज की ऑडियंस की बात की जा रही है वो संस्कृत नहीं समझने लगे वो हैवी हिंदी टर्म्स नहीं समझ लगे यहाँ लाइव ऑडियंस के ऊपर अगर कोई मुझे आके बोल दे कि क्या नाम है जी हम तो हिंदी भाषा का प्रयोग इतना व्यस्त तरीके से करते हैं कि मैं फिर मान जाऊं ऐसा है नहीं है तो डेफिनेटली जो लिंगो उन्होंने रखनी है वो आज की रखनी है लिंगो को छोड़ो इफ यू हैव नोटिस अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर हिज हेयर स्टाइल वाज लाइक आज का पेपी बाल खड़े हुए I हैं loved ही it. इज वेयरिंग मुझे लॉन्ग बहुत बूट पसंद था. या तो उन्होंने वो चीज को आज के टाइम में रखना इंस्टेड के एक डम्बल डोर है जिसके लंबे Yeah. बाल हैं नहीं, but जो Odie, see, लाठी पकड़े I खड़ा kind होता है of disagree क्योंकि जब पद्मावत या बाजीराव मस्तानी वो भी मूवीज आती हैं तो वो भी ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो आजकल नहीं यूज होते सो आई डोंट हैव अ Yeah. प्रॉब्लम विद यूजिंग दोज वर्ड्स एट ऑल क्योंकि अगर वो आपके मूवी से मैच करते हैं बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट अस्त्र एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मांड तो अगर इसकी बातें हो रही हैं तो they're not going to be like hey what's up let's hit this road right here they're not going to talk like that. Yeah. So I don't have a problem with that at all but I do have a problem कि एक सीन था जहां आलिया जाना चाह रही थी शिवा के साथ और वो कहती like you're like Shiva and ईशा का मतलब जानते हो ईशा इस पार्वती पार्वती का नाम I'm like इतना भी नहीं चाहिए we know but I was नहीं like okay maybe क्योंकि people don't know कि ईशा इस पार्वती Yeah. नाम लेकिन अगर लोगों को you know पता है कि ईशान शिव जी का नाम है तो ईशा तो पता ही होगा ना so I don't know मुझे बस उससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी but let's get to Naveen's comment guys have you seen Kangana's post comment against Brahmastra why she sometimes gives negative vibes although आप लोग कुछ कमेंट करेंगे इस पे तो sometimes negative vibes नहीं always negative vibes I want to say I think Yeah. she always has a खट्टे अंगूर issues 100%. because I love Kangana she's a great actress लेकिन she does not know how to support people who do well or good don't do cinema well उसको हमेशा yeah कमेंटरी देनी होती है कि कौन सी मूवी कितना बिजनेस कर रही है सक्सेसफुल है या नहीं आई जस्ट वांट टू से पहले अपनी मूवीज का हाल देख लो ये जो पिछले 2-3 मूवीज आई हैं इसकी क्या हाल हुआ है सो दैट्स व्हाई आई थिंक डोंट टॉक until you can back it up like if you Yeah. think तलाईवी उसका क्या बिजनेस था धाकड़ उसका क्या बिजनेस था जजमेंटल हो क्या मनी करने का उसमें क्या बिजनेस था so I just think Kangana is a brilliant actress, but she just keeps opening her mouth and making people think of ways to go against her. I Yeah. just don't understand why you want to do that. 100%. I agree, Kirti. I do feel that she's very judgmental. Like, I know she's definitely a great actress. She's won so many awards. But at the end of the day, learn to be humble. Don't put people down. Obviously, all this thing that she does, obviously we know, like, if you have a backbone in the industry, it's advantage for you. And obviously you do Yes. get roles and stuff, all this nepo talk and stuff that she's done. But then at the end of the day, the people that are not even from the industry, who are outsiders, who have worked from day one, worked their way up, you're digging them out, you're putting them down. So I don't understand, like, what's her mindset? Why is she being this double dolki? Like, that's what I don't like about her. And I feel that this behavior, it's either attention seeking, or it's just trauma. I don't know what it is. I mean, I just feel like it's just not needed. Like, focus on your work,
spread positivity and just live and let live. That's it. That's what the world is about. Live and let live. But if she doesn't understand that, then I don't have that respect anymore. So Suji Panda is saying Moni Roy is the highlight of Moni. I love Moni. 100%. So, you know, superhero movies mein, forget superhero movies. Even in any movie, a villain that's a female is not that common. So यहाँ पे इतनी बड़ी movie है, big budget, and Moni Roy, okay, is the main villain in this first movie. I loved it. And ye bhi TV actress, right? Like, you know, ye distinction log karte hain ki TV actresses ko kaam nahi milta. Moni Roy is playing a villain opposite Ranbir in one of the biggest movies of his career. I loved it. I think she was hot. She was sexy. She was fierce. She had that her look in her eyes, a crazed look. मुझे वो बहुत अच्छी लगी. Yes, थोड़ा over the top जा रही थी in a little bit of scenes, लेकिन उसकी presence बहुत अच्छी लगी मुझे. मुझे ये भी थोड़ा issue हुआ उसके character के साथ कि वो इतनी powerful है ना? तो ऐसा एक सीन आया था जब वो अपनी आर्मी को तैयार कर रही है कि हमें वो ब्रह्मास्त्र ढूंढना है whatever वहां एक क्लिफ पे अमिताभ गुरुजी हैं, शिवा है, the other individuals with their the Astra individuals are there. How does she not know कि वहां से लोग मुझे देख रहे हैं अभी के अभी, right? And so I don't understand कि उसको इतना ही वो self aware नहीं है वो. And then मुझे ये नहीं समझ आया जब क्लाइमैक्स के दौरान she is trying to go up against Alia to get that piece. She can't catch Alia. She can't find Alia. She can't subdue Alia. This is जुनून जिसने शाहरुख को मार दिया, जिसने वो नंदी अस्त्र को मार दिया, and यहाँ पे वो आलिया को नहीं पकड़ पा रही. So मुझे ये थोड़ा हजम नहीं हुआ मोनी रॉय के कैरेक्टर के साथ, लेकिन वो that wasn't Moni's fault. That was just जुनून जो कैरेक्टर लिखा है, जो screenplay था, it was that fault. But what do you think? How did you like Moni? I thought she was incredible. I loved Moni, definitely, for sure. I think for Moni, definitely, it's definitely a good thing for her career. Such a big movie. It was basically a big movie, but just her presence was just so powerful. Even for an actress like her, people say a TV actress, even for her to come on that big parda and stand up against Shah Rukh Khan and beat him, I was like, wow, girl, like, come on. She was like Wonder Woman for me. She was amazing. Obviously, she did go overboard. मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि where she's got all this power from. I wanted to know how she comes into the story. How is obviously they've created her. How has he brought her into the picture? वो क्यों उसकी मदद कर रही है? They don't show the meaning behind it with the history behind it. They just show that she's obviously a follower of Dev. They obviously will, now. they will. क्योंकि ये तो first movie थी ना, तो जब देव का character introduce होगा, तब ये सब establish होगा. ये तो अभी first थी. अगर सब कुछ दिखाने लग जाते, ये movie 5 घंटों की हो जाती. So yeah, no, 100%. But I feel in the first one, they should have shown a bit of that, where she comes from, or her motive, or like what it is. Is she actually after the Brahmastra for a negative vibe? They did say that. She's working for Dave, and Dave has brainwashed her into doing this for her. वो तो उन्होंने दिखाया सब. अच्छा, yeah, wait, but I want to see the backstory of how he meets her, how he gets. But like you said, maybe वो Dave की saga में दिखाएंगे ना. This was Shiva's saga. That's why. I guess they will. But I love her presence. Pankaj is saying, okay, Odie's here. Okay. After seeing Alia and Gangubai and seeing her growth, expected a bit more mature and more acting-based character from her. Do you know this movie was shot way before Gangubai even was a thought? Yes. This movie कितने सालों से production में है? This movie would have been out like 2 years ago अगर pandemic का ना होता बीच में. So she has definitely grown as an actor, and Gangubai is an author-backed role, not Isha from Brahmastra. लेकिन yes, ये movie बहुत पहले record हुई थी, shoot हुई थी. So there is going to be a big difference in her then versus her now. I 100% agree. Okay, Odie. Yeah, एक second. एक तो चीज ये पहले ये जो इन्होंने अभी बात की आलिया को लेके I'm very clear कि like कीर्ति easily mentioned कि जी क्योंकि पहले की फिल्म है रीज अब Odie. Is he frozen again? To freeze हो रहा है Odie. Odie. जुनून का जुनून खत्म हो चुका. जुनून का जुनून खत्म. Okay, so Mr. Vedar Tix. Okay, anyways, the first movie was all about establishing the plot and concept so that audience could relate with the story. Most of the mysteries are left for the franchise. Yes, exactly. So talking about are you working? Yeah. अच्छा एक सेकंड हैरिस let me complete that आलिया thing. एक तो हमें पहले ही पता है कि जी आलिया भट्ट ने ये फिल्म पहले की हुई है
उससे पहले की फिल्म है पेंडेमिक से पहले की, शी इज लुकिंग इवन यंगर, यू नो, आपको नजर भी आ रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। अब ये बात है जी कि मूवी में उसका काम क्या था, तो डेफिनेटली शी वाज दैट कैटलिस्ट जो शिवा की अग्नि, अंदर की अग्नि को जगाती है, शी बिकम्स दिस बटन। लेकिन क्योंकि ईस्टर एग्स इतने ज्यादा है, थ्योरीज इतनी ज्यादा है, वो चीज लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लाइक कीर्ति मेंशन्ड कि देयर वाज अ सीन जहां पे वो कहती जी, यू नो व्हाट डज पार्वती मीन, व्हाट डज ईशा मीन, ईशा मीन्स पार्वती। तो अगर वो चीज वो मेंशन कर रही है, डेफिनेटली कोई ना कोई लिंक होगा जो आगे जाके हमें नजर आएगा इन द सेकंड पार्ट। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। दूसरा, इफ यू हैव नोटिस, शी रिमेन अनफेज्ड। बार बार अगर उसने ये बोला है मूवी के अंदर, कौन हो तुम, कौन हो तुम, एवरी टाइम शी गेट्स सरप्राइज। तो शी इज, यू नो, लाइक दिस के हाँ कौन हो तुम। और अगर केसरिया वाला गाना किसी ने बड़े गौर से देखा है, देयर वाज अ सीन जहां पे वो पासपोर्ट उसका खोलता है और वो क्लोज कर देती है, तो वो अपनी आइडेंटिटी उसको पूरी तरीके से दिखा नहीं रही है। शिवा इज इन लव, ठीक है, और वो जानना नहीं चाहता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, बस ये पता है इंग्लैंड से ही, लंदन से ही है, बट शी इज गिविंग हर 100% अवेलेबिलिटी टू मेक श्योर कि ये भरमांस पहुंचे, वो स्कूल में पहुंचे या वो उस जगह पे पहुंचे डेफिनेटली। तो वो एक डेफिनेटली कैटलिस्ट बनती है। और एक फैंटेसी फिल्म में ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रोल होता है। डज नॉट मीन शी बिकम्स, यू नो, पार्ट ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स। आई वांटेड हर टू बी पार्ट ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स, क्योंकि जब पहले ट्रेलर या टीजर रिलीज हुआ, आई ऑनेस्टली थॉट कि जल अस्त्रा ये होगी, लेकिन जैसे like you said, वो establishment हो रही है। I think second part में उसका bigger role होगा। बिल्कुल, यहाँ भी ends up she was in the thick of things. वो तो कीर्ति मूवी देख के हमें पता चल गया, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब टीजर आया तो लगता ऐसे था, लेकिन क्योंकि इफ यू हैव नोटिस आखिर तक शी इज देयर, देन शी बिकम दिस प्यार का क्या नाम है, अस्त्र। यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन, कनिष्क ने एक दफा मुझसे पूछा था कि जी जब आपने टेलर टीजर इसका क्या नाम है रिव्यू किया था, तो यू गाइस वर, स्पेशली आई वाज वेरी स्केप्टिकल अबाउट द केमिस्ट्री बिटवीन द टू। आई स्टैंड ऑन माई वर्ड्स, मुझे वो केमिस्ट्री उतनी तगड़ी नहीं लगी जितनी मुझे रणबीर और दीपिका या रणबीर और प्रियंका की लगती रही है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री। लेकिन क्योंकि जब आप प्यार का अस्त्र दिखाते हैं, एंड आई बिलीव इन द पावर ऑफ लव, क्योंकि शायद हॉगवर्ट्स का भी तो बेसिकल प्रिंसिपल यही था, यू नो, कि वो आपको प्यार की ताकत है, प्यार का सब कुछ है। तो वो चीज आई अंडरस्टैंड कि अस्त्र दिखाना है, वो कितना स्ट्रांग होता है, शायद इसीलिए इतना पूरा हाफ डेडिकेट किया गया इनकी लव स्टोरी को। पहला हाफ अगर आप देखें, इट वाज टोटली डेडिकेटेड टू द लव स्टोरी। फ्लॉज है, डेफिनेटली फ्लॉज है मूवी में, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता था, आई फाइंड आलिया वेरी अप्रोप्रिएट, आई फाइंड हर ब्यूटीफुल। और मुझे लगा जितनी एक्टिंग उसको देनी थी उसने वही की है, इससे ज्यादा उम्मीद ना करें। राइटिंग को आप डेफिनेटली क्या नाम है कल्प्रिट मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। मुझे जहां तक इनकी केमिस्ट्री की वो बात करनी है, आई थॉट इट वाज फाइन बिकॉज दिस इज नॉट अ सेक्सी सेंसुअल मूवी जो वो आग दिखनी है। लेकिन इसमें ये जरूर दिखा कि Alia's character is smitten by Shiva, even though Shiva is the one that's in love with her like from the get-go. Alia मुझे लगता है जिस तरह वो रणबीर को देखती है इस मूवी में, मुझे लगता है उस नजर से देखते देखते उसको प्यार हुआ रणबीर से, because you can see that she was in awe of him. जैसे वो देख रही थी उसको, देख के मुस्कुराती थी, that cute chemistry was there. Obviously they weren't sexy and they weren't supposed to be sexy. लग गया वाला scene तो होने नहीं लगा। लेकिन yes, we are still forgetting that this also was filmed years ago. So Alia the actress now is different than Alia the actress then. तो मुझे लगता है अगर second movie आती है, third movie आती है और इनकी story continue होती है, the chemistry will build. You know, at least I'm hoping. But I do think कि love story को थोड़ा backseat लेना चाहिए था. Okay? I don't. Okay, love at first sight होता है, ठीक है, I agree. Okay, लेकिन इतना लव होता है कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर, हाँ, I will die for you, you live, I will die, इतना हो जाता है. Like Tino, I'm asking you, Tino, did you have love at first sight? And अगर love at first sight हुआ, if some villain came and will you sacrifice your life for me? उन दिनों में, आज की बात नहीं कर रही, उन दिनों में, the dating days, डेफिनेटली वो करता होगा, मैं तो ना करती। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मुझे आज भी, यू नो, स्पेशली जब आप खुद मेंशन कर रहे हैं ये मिलेनियल्स की फिल्म है, खुद मेंशन कर रहे हैं, लैंग्वेज वो रखनी है, तो फिर ये वाला जो एंगल है ना कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया और ऐसे हो गया कि भीड़ में एक लड़की नजर आती है
और वो पागल हो जाता है, वो थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। ऑन द सेम ट्रैक, या डार्लिंग अननोन, यू नेवर नो, तुम्हारा नंबर आ जाएगा ओइजा बोर्ड के ऊपर, आज मैं स्पिरिट लेके आती हूँ, लेके तो आऊंगी शाहरुख खान की ऑब्वियसली। एनीवेज द थिंग इज, जो आलिया भट्ट की जब बात चल रही है, एक सीन था जो आई स्टिल कैन नॉट फैंथम कि उन्होंने कैसे कर लिया, पुल ऑफ किया, क्यों किया। देयर वाज अ सीन जहाँ पे ड्रीम सीक्वेंस होता है, ही इज इन दिस ब्रह्मास्त्र, जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसको सपना आता है दैट ईशा इज बीइंग अटैक्ड बाय द जुनून फोर्सेस, और वो जोर उसके पीछे गया हुआ है, मार रहा है, पीट रहा है, वो छलांगे मारी, कहती है मैं तुमसे नहीं डरती, ठीक है, और पीछे से पूरी सेना आ जाती है, क्या नाम है, ब्रह्मास्त्र की और ब्रह्मांश की पूरी सेना आके मिलके लड़ रही है। एंड देयर वाज सीन जहाँ पे जोर इतना जोर लगाता है, वो नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करता है और वो नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे गिरती है, ठीक है, शिवा उठ के फोन करता है जाके बोर्ड के ऊपर, और वो गिर के फोन उठा रही है, मतलब Yeah. आप ऊपर से छत से गिरी है, ठीक है, इतनी मरी हुई हालत में, हाँ, फोन। आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, हाँ शिवा मैं ठीक हूँ, शिवा मैं ठीक ठीक हो, हूँ, चोट लगी है, एक उसकी खरोच नहीं आई, एंकल नहीं मुड़ी, कुछ नहीं हुआ, लाइक सीरियसली। नहीं, Yeah. अगर वो भी था, कीर्ति फोन उठाने का किसके पास टाइम है, फोन तो बेचारा मर मुर जाए, वो पूरा सामान लेके गिरती है, फोन निकालती है, फोन उठा के उसको बता भी रही है मेरे से ये हुआ है। सो दैट सीन वाज वेरी बैड टू मी। मुझे लगता है अगर वो ये एंड वाला पोर्शन काट देते, द ड्रीम सीक्वेंस वाज सो गुड, मतलब वीएफएक्स की बात करें, आप फाइटिंग की बात करें, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फाइन। एंड कीर्ति, व्हेन यू मेंशन ना कि पद्मावत था या बाजीराव था, जहाँ पे लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो ईरा और दिखाया गया है, लेकिन ये आज की कहानी दिखाई गई है। दैट इज वाई मुझे लगता है कि वो जो लैंग्वेज ये इन्होंने ऑप्ट की है ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि ये आज की जनता की बात करें, उस ईरे की बात नहीं करें जब वो ओडी, तभी मैं कह रही हूँ कि उनके आसपास में आले दुआले फिर कहने वाली थी, आसपास जो लोग थे जैसे शिवा के फ्रेंड्स थे, दे टॉक्ड लाइक नॉर्मल पॉपुलेशन, but जो Exactly. ब्रह्मांश के थे लोग, they talked differently, so that's why I'm saying, because they are exposed to the Astraverse, okay, they're exposed to powers from not this world, so maybe that's why वो ऐसे बात करते हैं। and जो common folk था, जैसे उसके friends थे, जो उसकी cousin थी आलिया की, they didn't talk like that, even Alia Yeah. didn't talk like that, लेकिन जो involved थे उसमें, they did। and there's a question here, Siraj Afridi saying, I wonder what's Dimple Kabadia's superpower? You know what? To ride a helicopter. I hope कि उसका कोई रोल होगा नेक्स्ट फिल्म में, क्योंकि इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया क्या कर रही थी, क्यों थी, आई हैव नो आइडिया। मुझे लगा कि वो गुरुजी की वाइफ होगी, दैट्स व्हाई शी इज इन द आश्रम, लेकिन शी वाज गॉन इन 1 second too, so Dimple Kapadia was wasted in this movie, वो कोई भी कर सकता था I रोल। love the hair though. Such an amazing I talent. love What the a hair waste. though. In part 2 she has a bigger role, because I she hope is so. probably, she's obviously an older member of this ashram, Guruji ke saath, right? So she probably knows this Amrita and Dev story. तो मुझे लगता है Yeah. उसमें ये होगी, I'm hoping at least. Odi, what do you think? Yeah. Exactly. Or Harris, yeah, go, one of you. So, guys, talking about, there's a few things I want to mention now. First of all, talking about details. The funniest scene that I found was kind of weird is, and I think I spoke to Odi, me and Odi had a chat about this. Ke, when he meets Nagarjuna and he says to him, ke, ye Brahmastra ka jaake to aapne ye dena hai jaake, Guruji ko. तो yeah, the pizza scene. So he goes कि आपने वो ब्रह्मास्त्र देखा, एक डिवाइस है जो 3 टुकड़ों में है, उसको जोड़ो तो वो पिज़्ज़ा जैसी दिखती है. So I was like, what the hell? I found that really weird. कि what a stupid description. Like, it's such a powerful thing. Like, why would you describe it as a pizza? That's what I found weird. Talking about the concept now, like a lot of people do have an issue कि this is a movie के बहुत सारी चीजें कॉपी की हुई हैं, बहुत सारा ये है वो है, it's not realistic. If you look at Marvel's I or find this DC's, comment funny though. Popcorn. Wait. Naveen is saying, guys, please make videos on superhero cartoons from the 90s like He-Man. मैंने He-Man कभी देखा ही नहीं. Captain Planet, he's our hero. I know that one. I also have Thundercats. I don't know whether you guys have seen Thundercats or not. I love No. Thundercats. Yeah. So talking about concept, like people say, movies copied and this and that. If you think about it, a lot of movies are copied nowadays, but for a superhero movie, the basic concept is there's a normal guy, he's trying to discover his powers. Underdog. And obviously he meets this girl or person, that person helps him, and usko pata chalta hai ki uski taakat kya hai, and the story revolves around that.
if you look at every movie, Spider-Man, Batman, all these, this is where the concept Everything. starts from. So why are people saying "Okay, it's copied"? It's not. A superhero movie is what this is about. Even for example, Rakesh Roshan ki movie Krish, that's what it was. When Krish was born, he was trying to Very true. discover, okay, why I'm so powerful, where did I get this power from? Even though it was inherited from an alien or from his father, the basic concept was कि वो पता करे कि मुझे यहाँ से ताकत कहाँ से मिलती है, मैं उड़ कैसे रहा हूँ, how can I, cross over mountains and stuff. So that's the basic thing. So I do feel the concept is definitely good. Obviously, there's some lows, that there's cringe in there, the dialogues. For me, obviously, talking about Alia, she's definitely a very good actress in today's time. But you can see the difference because उसमें वो बच्ची है. कुछ साल पहले तो craft में you can tell the difference. That's why when I went to watch the movie, and I told you guys, I said I find her really thandi, but then it's understandable because the movie was made before pandemic. Now it's released, तो वो craft पता चलेगा. I don't know why we say she's Thandi. This is the role. This is what she has to Yeah, perform. but She is obviously it's not what she's forced been to given. bring Yeah, there's something not much she else can in the. do. Script अरे, script एक उसके second, एक हाथ तो में ना, नहीं है. She's not a I director. She's know. an actress. So it's what she can do. You're right. Yeah. Harris, I love your explanation of Rakesh, Ocean Krish, या Superman, या Batman, या even Spider-Man for that matter, even that Harry Potter. Same story line है ना कि जी एक Yeah. बंदा है जो अंडरडॉग्स है, जो बुली फील करता है या जो लो इन Yeah. लाइफ है, something like that, you know. मेरी फेवरेट इंडियन फिल्म वो भी एक सुपर हीरो की फिल्म थी. इट इज नॉट क्रेश, इट इज मिस्टर इंडिया. एंड सेम गोल्स Yeah. के एक नॉर्मल लड़का है जो अनाथ आश्रम टाइप Exactly. में बच्चों को कर रहा है और उसको सुपर पावर मिलती है. आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए उस इमोशन से. Yeah. वो चीज मैटर कर जाती है इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. अब उसके ना सीरीज भी बिकेम दिस मीडियम ऑफ और यू कैन से कैटलिस्ट. बट डेफिनेटली हर एक का अपना अपना तरीका होता है. आज के टाइम पे अगर वो आइटम नंबर करती इनके ऊपर तो डेफिनेटली थिंग्स वर डिफरेंट. खैर ये तो Yeah. अस्त्रवर्ष की बात है, ये तो यूनिवर्स पूरा क्रिएट किया गया है. माय क्या नाम है, एक चीज जो मुझे लगता है जो शाहरुख खान का पोर्शन डाला गया, इट वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स फॉर मी. I एक तो loved Yeah. it. मोहन Yeah. भार्गव, It was यू नो amazing. दिस साइंटिस्ट स्वदेश उन्होंने की थी 2004 में. ही वाज साइंटिस्ट नासा का एंड हिज नेम वाज मोहन भार्गव. तो वो जो पूरी इन्होंने वो जो लीनियज पकड़ी है वहां से कि इसको लेके आओ, वो पूरा सीन जो क्रिएट किया गया, आई लव्ड इट. मेरा ख्याल से जैसे भी मैंने जस्ट रेड थ्रू के जी, अयान मुखर्जी इज कंसिडरिंग अ स्पिन ऑफ ऑन मोहन भार्गव ओनली. ये जो वानर रस्सा उन्होंने जो पोर्शन किया है, आई थिंक उसके अंदर पूरे का पूरा डिजर्व करता है कि एक स्पिन ऑफ डेफिनेटली बनाया जाए. मुझे नाग अर्जुना का वो जो अनीश शेट्टी का करेक्टर था, जहाँ पे एक आर्टिस्ट है, वो नंदरी अस्त्र वाला वो जो ट्रक के साथ वो जो फेस ऑफ था, इट वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स. तो वो चीजें आपको डेफिनेटली गूज बम्स वाले मोमेंट्स तो ही है. दिस इज व्हाट ऑडियंस वेंट फॉर कि जी ये सीन आया है. Mm. एंड हैविंग सेड ऑल दैट, मतलब मोनी रॉय को हाउ कैन समबडी डिनाई? शी इज इन द ग्रेटेस्ट फॉर्म. शी लुक्ड Yeah. वाइवेशियस, शी लुक्ड विशियस, शी लुक्ड सेक्सी एंड शी वाज ऑन पॉइंट. मुझे लगता है कि कभी कभी ना जब ट्रेलर आया हुआ था तो मुझे तो अभी आवाज आएगी, मतलब डेफिनेटली लोगों को Yes. लगता है कि ये नागन अवतार में. लेकिन दैट गर्ल स्पेशली, मेरा ख्याल से जब जब मोनी रॉय आई है, आई वांटेड दैट. क्यों? शायद मैं नहीं चाहता था लाइक कीर्ति सेट के लव स्टोरी थोड़ी ज्यादा दिखा दी, विच वी नेवर Yeah. वांटेड. Yeah. मोनी रॉय थैंक गॉड आती थी स्क्रीन के ऊपर एंड इवन हर कॉन्वर्सेशन विद दैट ब्रह्मदेव, वो जो पूरा पोर्शन था, इट वाज सो ब्यूटीफुल I कि love the जहां whole पे thing. आई मुझे लव लगता है दैट. कि जो शाहरुख का ना easy charm है. He has such a charm about Yeah. him. And I ओह loved that he was playing this scientist guy. वो scientist क्यों था, क्यों इतना famous था, वो हमें पता नहीं चला. I'm hoping Ayan Mukherjee does a spin-off on just Vanar Astra because I think Yeah. Shahrukh was amazing in that role. मुझे बहुत अच्छा लगा. Like I said अपने review में, Shahrukh was living out his dream क्योंकि शाहरुख ने हमेशा कहा था कि if India makes a superhero film, it needs to be on Hanuman. And we need to teach our younger generation about, all this rich history India has. So I Yeah. love that Shahrukh got to be Vanar Astra in here. So it was great. एंड जहां तक कॉपी की बात है, इन्फ्लुएंस की बात है, जब मैंने टीजर देखा था, जब मैंने ट्रेलर देखा था, मैं बार बार एवाटार की बात कर रही थी. एवाटार द लास्ट एयरबेंडर, बिकॉज इन देयर wind, fire, earth, water, all these elements were used as well. And वहां भी Yeah. avatars की बात होती थी, powers की बात होती थी, good versus evil.
So I felt, oh my god, I hope this is not an exact copy of that. लेकिन फिर मुझे, ध्यान में आया कि hello, this is India we're talking about. Indian scripture has so much Agni, Jal, Prithvi, Vayu. So I'm like, this is an Indian concept through and through. So I'm very glad they played on this क्योंकि ये बहुत interesting भी है. And the way they incorporated the Nandi Astra, the way they incorporated Banar Astra, the way they incorporated Brahmastra, Agni Astra, I really like it. I think India has a very rich history in terms of its culture and religion or scriptures, whatever you want to say. And अगर वो use करके एक world बना रहे हैं, why not? क्योंकि if you think about it, Thor, Loki, that's also from the Greek mythology, right? Yeah. And from all of that, the Vikings, right? And so if they can use all of that with Zeus is coming, Thor is coming, why can't Indian people use that? So that's my thing. एक चीज I would like to mention, just because ये boycott की बात चलती है, oh they can't be original, Brahmastra can't be original, और South तो brilliant है. बाहुबली, excuse me, वो जो सिम्बा का पूरा कैरेक्टर था from Lion King, वो बाहुबली तो पूरी वही है कि जी फैमिली पॉलिटिक्स है, चाचा ने जमीन हथियानी है या एरिया लेना है, बच्चा गायब हो गया, बच्चे को पावर है. इट वाज ऑल लायन किंग स्टोरी. तो आप क्या नाम है इन्फ्लुएंस ले सकते हैं, डेफिनेटली क्या नाम है इंस्पिरेशंस होती हैं, लेकिन आपको क्राफ्ट देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वो बड़े पर्दे पे आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं. एंड आई रियली विश कि ये मूवी इतना बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को देखनी चाहिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि आप सेलिब्रेट करें. लाइक आई सेड, फैमिली को जाना चाहिए, बच्चे वुड एंजॉय इट, क्योंकि देव का सेकंड बार ओडी ने अपने आप को निहारते हुए भी कीर्ति की बातों पे कॉन्सेंट्रेट. ओ ऑब्वियसली कंचना मल्टीटास्किंग, मैं सिर्फ कीर्ति को देख के खुद को सेट कर रही होती हूँ ताकि कीर्ति से ज्यादा पृथ्वी लगू, क्योंकि सारे लोग मैंने तुझे बाहर फेंक देना है. मैं तो फिर थोड़ा कीर्ति क्या हो गया, तू मुझे बाहर कैसे फेंक सकती, तू तो ओरिजिनल ओजी है. एनीवेज द थिंग इज, ये जो हम बात कर रहे थे अभी कि जी मूवी को देखना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड पार्ट की चीजें छोड़ दी गई, द वे हमें नहीं पता मोहन भार्गव वानर अस्त्र he is dead or not, we do not know. I don't think so. I don't think so. क्योंकि ओडी he said कि कोई मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो is he dead? Exactly. और फिर नाग अर्जुना जैसे मरने के बाद दोबारा नंदी अस्त्र खड़ा होता है और फिर वो उनको धकेल के नीचे खुद भी जाता है. We never know that he'll return. प्लस अभी ईशा जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है, पार्वती खुद को बोलती है, वो स्कीम ऑफ थिंग्स में कैसे फिट इन होगी, जनून कहाँ गई है. एंड आई लव दोस दीपिका मोमेंट जहाँ पे बच्चे को लेके सला रही होती है, और वो पूरा सीन जहाँ पे उसकी माँ का एक हिस्ट्री दिखाया जा रहा है, दीपिका, इट वॉज वेरी एविडेंट. तो वो पोर्शन और वो पोर्शन अब देखना है कि जी अमृता क्या करेगी, या अमृता क्या करेगी, अमृता, ठीक है. और देव, वो जो देव की फॉर्मेशन आई है कि अब देव के पत्थर टूट गए हैं, अब वो अंदर से इतनी बाहर आ गई है, आई लव्ड इट. ठीक है. और didn't his torso look like Ranveer Singh's torso? I have to say. thought his torso looked like more तुषार कालिया, just because हम तुषार कालिया fan. या तुषार था वो, that whole look, that vibe reminded me of Ranveer Singh. I liked it. The vibe was definitely Ranveer. The vibe was Ranveer, but the body, I don't know. I felt कि it is तुषार कालिया. I really wish वो, क्योंकि I can scratch it and love it. Enjoy it. I love it. Yeah. No, it'll definitely be good for Tushar's career. If he's in this as Dev, then it's definitely going to be amazing for his career. Dev to Ranveer Singh ही होगा. Yeah, but if it is like Odie's saying, if that happens, that's going to be next level for him. Guys, तो लाइक कर दो, 800+ लोग देख रहे हैं. मेरे सुनने में है कि जितना मैं लाइक बोलूंगी तो आप लोग लाइक करेंगे, और YouTube भी इतना ज्यादा करता है, तो लाइक कर दे प्लीज. इतनी मेहनत करके आई वाज लिटरली बोर्ड, मुझे 1 घंटे के लिए सोना था, लेकिन आई वाज लाइक मैं आपके लिए सच क्या होंगी जब मैं खुद को निहारूंगी, जैसे कंटेंट बोलती है. आज डैडी जी नहीं देख रहे, आई वांट हिम कि वो मेरी तारीफ कर दे. बाप इतनी प्यारी नहीं हो सकती. देयर वाज अ मॉडल फॉर श्योर. What was the model for sure, SS? The Ranveer's torso. Oh, just kabhi torso tha. Yeah, that was just for the shoot, just for the Mr. Vedartix. Is that how you say your name? Vedartix? Veda RT. Oh, Veda RTX. Okay.
Isha and Amrita both were wearing the same ring. How is it possible? I didn't even pay attention to that. लेकिन अगर ये सही है तो damn, मुझे लगता है, you know what? एक कनिष्क का भी both ऐसी are comment था good. Alia is playing for the bad side. I think that would be amazing. क्योंकि then Alia is using Shiva and trying to get into his, inner circle, and then she will go against him. I think that would be fabulous. I would love Yeah, if that definitely. happened. You know, I when would I love was watching the movie, that's what I thought that's going to happen. Because she might, obviously, it might be revealed in the end. It might be left on a cliffhanger. Okay, she's using him or something. That's what I thought. And if that's happening, I think that's definitely good for Alia's role. I wanted to see that progress in this Guys, why movie. don't you understand? एक चीज बड़ी क्लियर थी. जब रफ्तार उसके पीछे गया, रफ्तार didn't damage her. वो कर Yeah. सकता था, Yeah. वो नहीं करता. इस तरह जोर जब उसके पीछे पड़ता है, उसको पता कि ये है. एंड सेम है, जुनून जब एंड में उसके There's पीछे so होती many है, moments. जुनून उसका That's कुछ why. नहीं करती है. जुनून Yeah. उसका कुछ करती ही नहीं है. Because So of that, definitely things Oli, are I there felt that to there's be so many more explored. moments What? that you feel that, kahani mein twist aa Kanchan is jayega. That's saying what I Dev felt. Puneet Pathak hai? Really? No, 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 no. नहीं, No, 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 ऐसा no. हो नहीं सकता. That was looking No, like no. Tushar Kalia's body, not Puneet It's not Pathak's Puneet body. Pathak. Just say Tushar Kali and I'll be happy and I'll sleep ओडी को peacefully. देव बना दो यार, उसकी ईद करा दो. ओटी को देव बना दो. Why would I be Dev? I would rather be Dev की कौन सा जुनून. question भरत देव पटेल? की कौन सा जुनून. question? कौन सा question answer करना है? Just show Ricky का comment. Just show Ricky का comment. I loved it. I want If you Odie can. to step on me. Please come. I will definitely step a lot on you. अरे Shahrukh is not Dev, yaar. Shahrukh is not Dev. Mhm. I don't No. think And so. that's not Shahrukh's body, for heaven's sakes. And that's not Shahrukh's body. Please. Yeah. उसने वो हमने We दर्द have डिस्को में seen देखा Darde था Disco. और दर्द डिस्को की बॉडी ये नहीं थी. Oh, Oh God. एक बाल्टी चाहिए थी मुझे तो बस. Yeah? हाँ, जब दर्द डिस्को आया था, I wanted a बाल्टी. ठीक है, That dard ताकि disco was not working for me. जैसे लड़कियों ने पानी फेंका था ना, I would have thrown that water on his face also. Please Yeah. put on some soap. Kirti, I have a question. That Amrita तो मर चुकी है, उसका तो past दिखाएंगे second part में, पर Dev present में और past में दोनों ही में होगा. तो main battle Shiva versus Dev होगा, not present में, not Amrita. What if she's not dead? What if they're Yeah. just saying We she's don't dead? know. We You don't know don't if know she's for dead or sure. not. Superhero movies में ये होता है, oh, that person is dead, और फिर वो वापस होता है. And who knows, this is just a story to cover. कि किसी को Yeah. उसका, location पता ना चले. It could be anything. We don't know. And I would love to see past versus present. How the past influences what's happening in Very the true. present. Yeah. That'll be cool Very to That see. true. that would be important for sure, yeah, and it'll give us a और history about how everything is, and definitely we'll get to see that Amrita story. And even if she is dead, at least we'll get to see how everything's happened. Like Ranveer thinks she got burned in the house in the room, but maybe it's not. So we want to see that. We want to see more entertainment, and you guys need to realize it's a Bollywood movie at the end of the day. Usme masala fantasy to hogi for sure. It's not going to be perfectly reality. Come on, otherwise entertainment का factor फिर मजा नहीं, क्या? There's no हैरिस एक point. और चीज है. देखो, जब आप इंडियन मैथोलॉजी पकड़ रहे हो, तो जब हम त्रिमूर्ति की बात करते हैं, देयर इज विष्णु, देयर इज शिवा एंड देयर इज ब्रह्मा. तो अगर शिवा की कहानी दिखाई जा रही है, तो प्रॉब्ली विष्णु की कहानी भी होगी, प्रॉब्ली ब्रह्मा की कहानी भी दिखाई जो जैसे ब्रह्मदेव की बात की जा रही है, क्योंकि उनके भी अपने अस्त्र रहे हैं, चाहे वो नयन अस्त्र रहा हो, चाहे वो पशुपत अस्त्र रहा हो ऑफ आई थिंक नयन अस्त्र वाज ऑफ विष्णु प्रॉब्ली. आई डोंट रिमेम्बर नाउ. लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स इसी के ओ माय गॉड. अविनाश, आज यहाँ का रास्ता कहाँ से कैसे भूल के आ गए? Is that a word? अविनाश प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें. वी लव यू. और लाइक करो, कमेंट किया करो. अविनाश, वेलकम और फाइनली. प्लीज एक अच्छी सुपर चैट भेज दे. मेरे हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना और जुनून के लिए. इसको भूलो, मेरे पे भेज दो. Ricky, I low-key want PC in this franchise. Me too. Me too. Yeah, should be good. She will be a great अस्त्र, a negative अस्त्र. She would be, yes, जुनून की कोई रिश्तेदार. negative. Astra. Priyanka Chopra in a negative role would be fierce as hell. I think. Yeah. Antagonist will be her forte. खैर वो तो कंगना भी कर चुकी है. If she is not dead, तो सारी limelight तो देव versus अमृता ही जाएगी. तो
the second part is supposed to be Suresh, Dave. One story लिखा आ की गया था बात है ना, Dave, तो Dave को ही मिलेगी limelight. Yeah. Yeah. The सुरेश, first अब part is story की बात Shiva, है ना, second part is Dev, don't you third want part to is see, something else. yeah, don't you want to see Deepika and Ranveer and Yeah. Ranveer in the same scheme of things? I would No, love to. and if you watch Yeah, and like the Alia. Marvel movies, हर एक movie में एक या दो superheroes की story होती है. Like even when they do their Yeah. own, like Thor, or they do Hulk, or they do Iron Man, right? So, and this one even said कि hello, this is Brahmastra Part 1 Shiva. Then end में लिखा आ गया था Brahmastra Part 2 Part Dev. 2 तो ये Dev, Dev yeah. की story होगी. I love it. I love it. It's a good concept, definitely. It's interesting. Yeah. So what else, Odie? या एक तो जब कंगना रनौत की बात चलती है, रिमेम्बर उन्होंने भी क्रिश में ये एक एंटागनिस्ट का रोल किया था, शी वाज मानवर, और उन्होंने बड़ा हैप्पीली किया था। तो आज अगर वो इतना क्रिटिसाइज करती है फिल्म को, तो उनको थोड़ा देख लेना चाहिए कि लुक लाइक शिल्पा। आई हैव टेकन दिस कमेंट शिल्पा शिंदे एंड आई थिंक आई लुक लाइक उर्वशी रौतेला फॉर नो रीजंस टुडे, just getting lined up. Go back to Jadugarni mode. GK, I use GK so much. Can you please bring me that? Thank you, Binash. Bring you GK? No. Bring me that Jadugarni mode. ओइजा बोर्ड ला दे, मैं लाल लाल असल में अंधेरा करना पड़ता है ताकि लाल रोशनी नजर आए। Don't you think it will be Don't unfair? you think it'll be unfair for Ranbir? No, not at all. No. क्योंकि इनको पहले You से have got स्टोरी का movie. पता है कि ये फ्रेंचाइज है, ये ट्रिलॉजी है, 3 पार्ट्स Yeah, होने, and they उन sign a सबको पता contract, so है. they know. Yeah, they know what they're getting into. Yeah. And we don't know. What if Ranbir roles turns out to be super powerful? We don't know till we watch the next movie. Like, abhi to planning chal rahi hai, kuch decide hi nahi hai, so we can't just judge. We can just make assumptions, but we can't decide. अच्छा, दिस इज अजय स्विफ्टी जिन्होंने लिखा था प्रॉब्ली यही कि जी क्या लॉजिक है। तो आई होप यू गॉट द आंसर कि जी यू गॉट द आंसर कि क्या नाम है, लॉजिक नहीं होती, स्टोरी टेलिंग होती है, फैंटेसी के अंदर थ्योरीज होती हैं। तो या No, I don't want Ritik Aishwarya as Dev and Amrita. No. Why Ashwarya and Ritik? No Aishwarya. No. She'll be too plastic. I'll be very honest. She'll be too plastic. We don't want the Jodha Akbar vibes here. No, it's not about Jodha Akbar. I love them in Dhoom too, but I think Aishwarya is too plastic right now, and I'm looking forward to seeing her in. You won't forget about it, Ajay. ये OTT में आ जाएगी, तब तक फिर 2-3 बार देख लेना, फिर स्टोरी याद आ जाएगी, फिर न्यू देखना। हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब Infinity War आ रही थी ना, and the last Stand or Endgame आ रही थी, I watched every single Avengers timeline movie to gear up for that. Yeah, that's what you're supposed what to do. People that's do the whole when point. you watch Fast and Furious, when you watch all these, you watch everything to catch up. हर पार्ट याद है लोगों को. They have to, see every part to get into the other one. ये होता है, doesn't matter. Yeah. By the way, someone commented, we want to see a new face. Tell Ayan Mukherjee. So I think फिर कीर्ति को रख लो. That's a new face. Yes, please. I love these movies. Yeah. And opposite Ranveer Singh. I don't want her opposite Ranveer Kapoor. Oh my God. But Odie, Tabahi hogi, fireworks everywhere. Come on, Odie. She'll be amazing. And you'll be the water boy. The water boy. I don't think that. Harris, tu mera spot boy bani. Tu chali ja. I'll be your spot boy. No problem. Okay, theek hai. Oh wait, why do I hear playback of my voice? Odie, you need to update your software. Okay. So, Disney's making Mahabharat web series with huge scale, make it pan world. That's amazing. I just hope यहाँ पे कोई पंगे ना हो. क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र को लेके इतने पंगे हो सकते हैं, तो महाभारत को ये टच करेंगे तो सोचो क्या हो सकता है. So I really hope people let this project be made and released without issues, please. Yeah, please. और एक और चीज, महाभारत जो अभी तक हमने देखी है, बेस्ट वर्जन वर इन 1990s जो दूरदर्शन पे लगा था, प्रोबेबली ठीक है, वो बेस्ट था. और उसके बाद बहुत कोशिश की गई है कि जी उसको बड़े पर्दे पे लेके आया जाए, लेकिन स्टोरी इतनी रिच है, स्केल शुड बी सो बिग. और जब भी बात की जाती है, पीपल वुड लव टू सी देयर फेवरेट आर्टिस्ट. लेकिन मैंने राजा एस मौली की क्या नाम है वो इंटरव्यू सुना था, जहां पे ही वाज टॉकिंग अबाउट महाभारत की कास्टिंग के ऊपर. ही सेड इन सबको लेके आना महाभारत के इतने ज्यादा कैरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि हर कैरेक्टर का सब प्लॉट है.
It's Yeah. not about only Pandus and all that. लेकिन सबके ऊपर है, तो हर कैरेक्टर कितना ज्यादा जाएगा, किस किस बड़े आर्टिस्ट को लेके आना, वो मुश्किल हो जाएगा. अब आपको नए आर्टिस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे. तो आई रियली होप कि जब ये वेब सीरीज जो तैयार हो रही है डिज्नी की तरफ से, इट शुड बी रियली गुड एंड पीपल शुड वॉच Thank इट you. इंस्टेड ऑफ जस्ट crib about it. Yes, Yeah. 100%. 100%. और तूने अपने बाल ब्लू डाई किए, वैसे ब्लू थोड़ा सा नजर आ रहे हैं इफेक्ट्स. Harold, you're not putting on your glasses हाँ, only. मैं रेंट दूंगी थिएटर्स का. डोंट वरी. तू अपना काम देख. What is it? What did you say? Who is Who's going to going to spend? pay the theater ladies? Are you going to? Have you got so much love for Karan that you will pay the rent for him? Yes, I Yeah, will. why not? She आ will. जाए Karan, मेरे पास मैं check लिख दूंगी. I said that's such a loser comment. I Don't be a know, for loser. Yeah. real. Don't be a Wow, loser, ouchie. darling. ये क्या बात होती है? रेंट कौन देगा? मतलब डेफिनेटली हम बात करें कि एंटरटेनमेंट के लिए, तो डेफिनेटली आप देखो जाके, इसमें इतना करीब यू नो हेट्रेड कितनी कर लोगे? माय क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट टू यू गाइस, कितनी नफरत कर लोगे? जब जिसको मोहब्बत करनी, जिसके लिए बॉयकॉट का शो डालते हो कि जी somebody always mention SSR in comment की justice for SSR ये वो, तो उसकी मोहब्बत उसके टाइम पे क्यों नहीं क्यों नहीं दिखाई? दिखाई? Exactly. तो स्टोन आप अगर चिड़िया थी, क्यों नहीं जाके देखी थिएटर्स में? इतनी Yeah. अच्छी Yeah. मूवी थी, क्यों नहीं देखी? वो बेचारा लिख लिख के पागल हो गया इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कि मेरी मूवीज देख लो थिएटर्स में, मेरी मूवीज देख Absolutely. लो थिएटर्स में. कोई नहीं गया. अब क्या फायदा? Exactly. And if the सुशांत को poor लेके आने guy का was still बेचारा. between us, you Yeah. guys would have just jumped on him. Still, उसको भी लोग बोलना शुरू कर दिया, और एक boycott बार करो, बता ऐसा दूं, है वैसा ये है. आप So उसकी it's not fair. डिसरिस्पेक्ट करते हैं. दिस इज हिज डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि वो Yeah. इसी इंडस्ट्री से था, वो Yes. मूवीज में था, वो क्या नाम है फिल्में करता था, ड्रामे में काम करता रहे, तो आज तो आप उसके प्रोफेशन को गलत कर रहे हैं. अगर आपने सिर्फ आउटसाइडर इनसाइडर की बात करनी है तो उसके ऊपर तो फिर बहुत सारे लोग हैं ना, और Yeah. जिन्होंने Come on. ये एक वो चला पड़ी है कि नेपोटिज्म है, ये वो है. एक बड़ा मैंने रिसेंटली देखा है, क्योंकि ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो के जी, करीना 100% कपूर हाँ. साइड, करीना कपूर साइड के जी, if you don't like us, don't watch our movies. Alia Bhatt says, I can't justify every time, if you're not interested, don't watch it. So we are not watching, we are boycotting. ये जिन चैनलों ने, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ आज, जिन चैनलों ये वीडियो चला चला के कहा ना, हाँ देखो बॉयकॉट करो, वही चैनल, उनको जब कोई क्रिटिसिज्म आता है ना, व्हाट दे से, यार आपको चैनल पसंद नहीं है, आप चैनल से चले जाए. तो फिर तो Yeah. हर कोई ये बात करता है, एवरीबडी. ठीक है, जब आप उसको एक हद तक करेंगे तो पीपल व्हाट वुड दे से. और अगर आप ये Exactly. सोचते रहेंगे, Ricky, this is 100%. ये मैं हमेशा कहती exactly, थी. Son Chiria was a good movie and it was a disaster at the box office. कहाँ गए He's थे had सारे so सब? many amazing Exactly. movies, He was but it's because so of the audience brilliant in that that don't want to movie. watch That it. movie was brilliant. किसी ने नहीं उसको घास डाली, किसी ने मूवी नहीं देखी. वो बेचारा, मुझे याद है इंस्टाग्राम पोस्ट डालता था कि you I guys saw have that to post as well. go watch. कोई नहीं गया देखने. And अब लोग कह रहे हैं कि justice for SSR. जब वो था, क्यों नहीं तब उसको कोई प्यार कदर दिया? नहीं. क्यों नहीं उसको सपोर्ट किया बेचारे को? SSR के Exactly. जस्टिस के लिए I आप love Sushant. I या love him to pieces, and I can't believe आज तक उसका नाम ले जा रहे हैं लोग to suit their own some warped इन agenda they वेन, have. इन वेन, Yeah, इन for their वेन. own convenience. That's what it Yeah. is. नहीं, एक और चीज है ना कीर्ति, अगर SSR को जस्टिस दिलाना है तो मोनी रॉय की फिल्म क्यों बॉयकॉट करनी है? ताकि वो भी Exactly. एक वो भी प्रोफेसर तो बन जाए. टीवी इंडस्ट्री से है ना. वो भी टीवी इंडस्ट्री से है, वो भी एक Yeah. आउटसाइडर है, जान मार रही है. उसने आइटम नंबर की है, आज वो एक बड़ी फिल्म में इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म में एंटेगनिस्ट बन के आ गई है, तो आप Yeah. मूवी नहीं देखना चाहते. Just Standing because against आपका SRK प्रॉब्लम है, and ये आपके Ranbir. डबल Come स्टैंडर्ड, on. ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ट्रस्ट मी. Yeah, and you know what? And Kangana is not the only one, guys. There's a lot of people who use SSR Yeah. names. Kangana to छोड़ो, forget celebrities. Twitter पे जाओ, हर दूसरा बंदा SSR का नाम लेके ये सब कर रहा है. Why? Why are you let the guy rest in peace. He didn't Yeah. have peace in his life. Now at least give him that peace. Why do you guys keep using his name? I don't understand. अगर उसका name use करना है, appreciate the work he did. Yeah, Appreciate the use it in a amazing guy positive he way. was. Don't His intellect. manipulate. Why are you only using his name to think of bad things, negative things? I don't And they are the understand. same people who bullshitted Abhinav कि वो तो boring है, scientist है. They are the same people. Exactly. Let Same me tell people. you. Same Yeah. people.
Yeah, तो आप exactly. ये बात करके नंबर स्कोरिंग मत करें, ओ एसएसआर को इंसाफ दिलाएंगे, आपने नहीं इंसाफ किया उस लड़के के साथ, आपने नहीं फिल्म देखी, तो आप किसी और को ब्लेम करें, खुद को ब्लेम करें, खुद बुरा Yeah. महसूस करें, खुद बुरा जाने, ट्रस्ट Yeah. मी, तब आप इंसाफ करेंगे उसके साथ। अगर आप इस तरह लोगों को बातें करते रहेंगे, लाइफ गोज ऑन, और इतनी नफरत पाल के आप कहीं नहीं जाएंगे आफ्टरवर्ड्स। सिराज, कीवर्ड वॉरियर्स को ज्यादा सीरियस नहीं लेते कीर्ति। हाँ, नहीं लेते, लेकिन सोचो हमारा तो कुछ नहीं जाता, हम तो फैंस थे उसके, लेकिन उसके Yeah. माँ बाप, फ्रेंड्स, Yeah. सिस्टर्स, His family, ब्रदर every. इन लॉज, वो कितनी बार इसको सुनेंगे कि एसएसआर का नाम फिर आ गया, एसएसआर का नाम फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। लाइक ये एक व्हाई और जस्ट बात है, लीव हिम, लेट हिम बी। सिराज जब वो जिंदा था तब क्यों नहीं प्यार दिखाया उसको, तब क्यों नहीं सिराज सपोर्ट एक किया? बात सिराज एक बात बताओ, कीबोर्ड वॉरियर्स को लेके कभी परेशानी नहीं होती है, हमें तो नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर कोई बंदा बात गलत कर रहा है, उसको लेके मैं चुप रहा हूं तो मैं उस गलत का हिस्सा हूँ, उसको लेके कीर्ति अगर चुप रहे तो वो उस गलत का हिस्सा है। हम एक बंदे से प्यार करते हैं और उस प्यार को जस्टिफाई करने के लिए मुझे दूसरे से नफरत नहीं करनी है। आई डोंट वांट टू हेट समबडी बिकॉज आई लव समबडी एंड दैट इज टू इट। मुझे उससे प्यार करें तो मुझे उससे प्यार 100%. करें। Tino is saying, let's also get one thing right. By boycotting, you know who you are really hurting? You are hurting hundreds, if not thousands, of people that have spent so much effort on a movie. 100%. क्योंकि ये जो 100%। actor लोग हैं जिनको आप boycott करना चाहते हैं, वो तो अपना check ले गए. They already have their money. So Yeah. and it's not hurting them. उनको already second, third, fourth, fifth movie lineup है. तो उनका कुछ नहीं हो रहा. It's all these people who are working behind cameras, the spot Yeah. boys, the technicians, you know, the graphics people, the costume people, everybody who is on the set, the lighting. So I feel like people need to get their agenda straight. Even forget them. Movie theaters में जो लोग काम करते हैं, उनका क्या? A Like, you know, business, there's so exactly. many people You're affected. putting workers down who Yeah. earn that money, that salary to provide for their houses. Yeah. Put yourself in their shoes. अगर आपका पैसा बंद होगा, आपकी कितनी फटेगी? Like think about it in that way. You can't be doing that to people just for your own convenience. It doesn't make sense. Ricky, And people just like to hate for some reason. I don't understand Yeah. how do their brains work. Twitter kholo to bas Hindu Muslim boycott this, boycott that, toxicity at its peak. Arg. Yes, you know what? I got a comment क्योंकि मैंने ये मूवी पसंद की और मैंने कहा कि लोगों को एटलीस्ट देखनी चाहिए, फिर अपना मूड बनाओ कि अच्छी थी ना नहीं थी. Don't just say, right? Yeah. And मुझे कमेंट्स आए कि मैं फेक हिंदू हूँ. तो फिर अब मुझे ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं, तो इन लोगों को सोचो कि उनको क्या क्या सुनने को मिलता होगा. मैं तो आई एम nobody, right? But these people get millions of comments a day and this is what is being said to them. And then याद है हैरिस, उस दिन जब हम लाल सिंह चड्ढा के ऊपर बात कर रहे थे कि मूवी Yeah. हमें अच्छी लगी, कितनी अच्छी थी, क्यूट थी, was a good adaptation, तो हमें बताया गया कि हम सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को. तो फिर Yeah, that was अब क्या ही ridiculous. Like, कहें? come on. Yeah. Like, एक guys, बात है, grow up. किसी Grow का some कमेंट दोबारा balls. दिखाना। People just like to hate for some reason, and Ricky, the only reason is people are jobless. This is what I Yeah, believe. nothing to They have do. nothing to Jobless, do, brainless, yeah, nothing to and do. they're taking their frustration out. So instead, people work on their lives and live peacefully and happily and Yeah. enjoy the Live movies. and let You know? live. Yeah. Yeah. Agree, H2, but they're the ones that still watch the movies too. Exactly. They do, exactly. लोग कह रहे हैं कि इस मूवी को 300 करोड़ का बिजनेस कैसे मिल सकता है, but then you guys are going to watch it yourself. That's why the movie is doing good. So then don't crib about it. Like, come on. And there was somebody who said धाकड़ का VFX बहुत शानदार था, cinematography अच्छी थी. So why tent? Why didn't you watch? Why didn't you go to theater? Instead of cribbing right now, जैसे Yeah. कंगना करती है, कंगना नगर की अच्छी फिल्म बनाई थी, वो नहीं चली, क्यों नहीं चली? क्योंकि आपने देखी नहीं है, और अभी Yeah, आप बैठ के it's- तारीफ कर रहे हैं कि End of the oh, the day- VFX was so good, the cinematography was good, the action was amazing, but I didn't watch it. I don't want to go to the I theater. love So, this OD. comment. Why don't they show such solidarity on issues that matter? 100%. I love you, Pooja. 100%. Yeah. Yeah. No, but Odie, you're absolutely Because right. you Because want at the end of the day, it's all in the audience's hand. We decide a movie. You know, actors, what celebrities, unka jo kaam chalta hai. It's in the audience's hand. If we stop watching it, then obviously it's going to be a flop. So it's in our hands to go and show how much we appreciate people.
अगर लोग कहते हैं कि इसकी मूवी नहीं चल रही, then this and that, SSR की नहीं चली, go तू and क्या कर fucking रहा है watch it. ओडी? What the hell are you doing? ये I'm सबको playing दिखा with रहे my कि मेरे friends. में कितना जुनून है, आके देख लो मुझे. He's like, तुम तो अपना जुनून मत दिखाना. yeah. Okay, Talha, तेरे I बाहर आ saw गए your बाहर. comment. No, Kirti, आजकल Archie's नहीं is है बाल, also देखो releasing जुनून ही next year जुनून on है. Netflix featuring Kushi Kapoor and Suhana. I'm so excited. What are your thoughts? So I 100% want to see this movie because ek to Zoya Akhtar ka project hai and I love Zoya Akhtar. I think she's a fabulous director. I love her content. Archie's मैंने कभी देखा नहीं. So for me, I will be going with a new, blank slate, no preconceived notions. I love that. तो मैं देखूंगी and पसंद आएगा तो पसंद आएगा. I'm really looking forward to it. Also, I love the costuming. I love retro looks. So I think it looks really cool. I want to see कि ये American setup से Indian setup में कैसा होता है. It'll be really cool to see. Yeah, I've not seen Archie's myself, so for me, I'm gonna go with a black mindset as well. So I just want to go with the flow and just be like surprised. So I'm definitely gonna watch it for sure. और मुझे जोया अख्तर में believe है. I go for the director. She's amazing. I go for the storyteller. That is why I like Ayan Mukherjee. ठीक है? Yeah. And 6-time Oscar award winning company का VFX है ब्रह्मास्त्र मूवी में कीर्ति. वो नजर भी आता है. Very honestly. You can see नजर the आता है. quality. 100% quality दिखती है. नजर आता है. Archie's is fully Nepo movie. No, it's not. I think 3 are star kids and 3 are not star kids. Yeah. अरे नेपो मूवी है तो क्या हो गया? नेपो Exactly. What's the difference if it's Nepo? Nepo तो हर जगह होती है. Nepo's in where you work. It's not Nepo only तो हर जगह है. Bollywood. वो businessman के companies में जाके देखो. Nepo's everywhere. Come on, I work in an Why are office. you There's not Nepo going to there. Big Boss? It doesn't affect me. मैं यहाँ stuck हूँ यार. मुझे Big Boss भेज दो. I would love to go. Yeah. And send Munawar her. is there. कीर्ति. Munawar is confirmed. Can you imagine? Munawar. I heard Divya as well. Divya What if Agarwal. I go there and me and him actually get along? Because Exactly. I like Dimagi people. Wouldn't And that be if awesome? I don't want to see that. Okay, you are getting along with Munawar. Yeah, I don't want to see that either, Kirti. I like Dimagi bande. तो अगर वो दिमाग I से know, खेल रहा है तो Yeah, look, but then I know. you'll have to लेकिन I all will the have power no there and issue play putting with him his down mind. either. I want to Okay, see you listen, there, but I playing know. with his mind. I'm excited for Jile Zara. Yes, I want to see this movie so much. Yes. And it is not shelved. Somebody said it's shelved. It's not. It's very much on the cards. अच्छा लेकिन unknown की मुझे बात That's why it's a little delayed. लेकिन it's coming. Yeah, unknown की मुझे बात का जवाब देना नेपो फिल्म के ऊपर. YouTube, what is their fault if they are born in that family? मतलब if you are born in some star परिवार, then would you call yourself कि नहीं मेरा हक नहीं कोई भी काम करने का? It's not fair. To be very honest, if somebody is born in somebody's family, how can I blame that? And how can you blame that? Wait, Ricky, Munawar will make it cry. Munawar क्या? कोई भी मुझे रुला सकता है यार. मैं तो एक गाना सुन के रोती हूँ. गाना छोड़ो. कोई मेरे सामने रोएगा, मैं रो पड़ती हूँ देख के. इसमें बड़ी बात नहीं है कोई. I cry like this. But you never know. She will make Munawar cry also. Yeah. He has that tendency. रोने पे बात आई. इस ओडी को पूछ लो how many times he has made me cry. Yes. ये भी है. But I think Odie is right, Kirti. You'll probably make Munawar cry. I will make everyone cry. Don't worry. जब मेरा रूप आता है ना तो सब डर जाते हैं. I really wanted Kirti और नेहा बसीम कभी इकट्ठे हो जाते. They will just kick out everybody. Oh man, me and Neha Basim would kick everyone's ass. बस लाइक कर दें क्योंकि आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया फिर तो अच्छी बात है. और लास्ट टाइम लाइव के बाद मेरा बहुत दिल है कि आप बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा लाइक करें, ढेर सारा सब्सक्राइब करें क्योंकि एक तो हम बड़े अरसे बाद आए हैं आप लोगों से प्यार करने के लिए. बार-बार सिराज कांटेक्ट करते हैं. वापस आओ, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बस लाइव आओ. तो तुम्हारे लिए आए हैं. Siraj is saying, I am proud Nepo kid. Yeah, we all are. I am also a Nepo kid. My father was a doctor, but I didn't become one because I was not good at it. Nepo kid. My dad is an engineer. He wanted me to be an engineer,
but I'm not an engineer. And also, engineer karke is not like he has his own company jahan mein chali jati. So kya nepo. Well, I'm a nepo kid for sure because my dad had a business and I used to work in his business. So yeah, I you am a are nepo kid. Nepo kid, No, get out of I here. am not. I am a very much I'm self-made यहाँ से person. आए हैं nepo. I जहाँ don't हमारे care. सपने खत्म होते हैं, हैरिस तुम्हारे सपने वहां से शुरू होते हैं, तो निकल यहाँ से. It's not my fault. I'm born in a business family, Kirti. मैंने There's so many हाथों people से out कार्ड in बना England के who are भेजे हैं, सबको बाहर लोगों फेंक के दो यहाँ से. प्रैक्टिकल कॉपियां बनाई हैं, ठीक है ना. आई एम वेरी मच सेल्फ मेड. तो यू आर नेपो, आई एम वेरी मच आउटसाइड. यार बाकी जो अच्छा यहाँ बट पे पूजा, आवाम है उनको भी यहाँ से बाहर फेंको ओडी फिर. They पूजा all nepo as पूजा well. पूजा का दिखाना, पूजा का दिखाना. पूजा का. वो You जब know भी there's आया like था. 3 pujas here, right? What did you do? Oh, Odi, what did you do? That I made Kirti cried. Kirti and I are so connected that we just cry. एक नहीं, इमोशन जानता Odie था. was being mean to me. Odie was being mean to me, तो मैं रोई हूँ. और फिर Odie कहता, कीर्ति अपना इमोशनल कार्ड मत खेल यहाँ. I was like, what the hell? हम यहाँ Big Boss खेल Sympathy card. Excuse me, इतना बुरा हाल था. Tino was in a meeting. Tino मुझे मैसेज कर रहे हैं. What the hell is happening? क्या हो रहा है? Tino Odie को मैसेज कर रहे हैं. क्या हो रहा है? क्या बकवास चल रही है? इतना क्रेजी था. हम 5 घंटे लगातार लड़े हैं. और फिर प्यार भी हमने बहुत किया. कीर्ति ऐसी बात नहीं है. Oh God. ये लो. There you go. Boycott Harris. Listen, I was a nepo kid. I said not anymore. सिराज को कुछ नहीं कहना. वो मेरा देव है. पिशावर से. But सिराज चीज़ बहुत करता है. Sad for you. तुम्हारा देव सिराज है. कोई बात नहीं. एटलीस्ट है तो सही. पाकिस्तान में सिराज ही बहुत है. मेरा देव कहाँ है यार? मेरा देव. Your dev is in the comments. Your dev is in the comments. I know. I used to be a nepo kid. You are. I'm not. I used to be, but I wasn't successful. तो मैंने खुद अपना काम शुरू किया. I love this. GK, ये पहली बार कोई अच्छा comment दिया है. I'm kidding. Okay. If anyone is against nepotism, please give all your property to me rather than giving it to your children. 100%. Property दे दो. So I respect you. Give your property to GK. I'm obsessed with you. Like you mentioned, I respect you. Pooja. Big boss. So cute you two, huh? Big boss आज तो देखो किसी छक्के से नहीं. मरते हैं हम भी. Guys, 700 people are watching. 700 plus. Please like कर दो. मैंने सुना YouTube जब like सुनता है तो वो like को. आज हमने कोई बिग बॉस टॉपिक्स नहीं करनी क्योंकि हम ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं. It's all about the Brahmastra. Harris likes कितने हो गए? I don't know. I can't check, Odie. I'm using it from my phone. बताओ. How many likes do we have? Siraj, I'll boycott Kirti. तू पहले super chat भेज. हाँ. अच्छा. Why are you all fighting for Bollywood? क्योंकि मेरी बचपन से मेरा सपना था कि मैंने ना बॉलीवुड जाना है. पर मेरे माधुरी बनना है. क्या करें? माधुरी बनना है. मैंने माधुरी बनना था. I love movies, यार. It's not about Bollywood. It's the love for movies. I love movies. चाहे वो Bollywood हो, Hollywood ho, I love. Yeah, they're all good. Oh, Siraj is saying 272 likes. Talha is very low. Make it 700 likes. This is not done. Siraj, I'm not going to come पेशावर again. की सारी आवाम को बोल अपने YouTube पे जाए, login करे and just like. जैसे उन्होंने किया था ना जनून में. क्योंकि जो हमारा प्रीमियर एपिसोड था, अगर जाके देखो उसके 11K व्यूज हो गए हैं. जो रेट्रो वीक का एपिसोड हमने किया, धक्के मार के हम 4K तक पहुंचे हैं. ओके, तो हमें पता तो कनिष्क आप हमारी TRP बढ़ाओ प्लीज. Increase our TRPs. जैसे जुनून बोलती है ना, साइंसदान जी, ऑडियंस जी, प्लीज लाइक का बटन दबा दें. इतने सारे अगर लोग देख रहे तो लाइक तो कर ही सकते. कंजूसो. या जैसे दिव्या बालन बोलती है, अपने दिल के बटन से अपना फोन घुमाइए और लाइक दबाइए. I love you and you impressed me. I was not your fan, but after Brahmastra I'm a big fan. Moni Roy. अच्छा, I was like किससे बात कर रहा है ये? कौन चैट में है? If you're watching this, I love your husband. Suraj is very hot and I love you. You are a very good actor. I love you. Moni, you were looking sexy,
fierce, Sexy. hot, Vivacious. amazing villain. I loved it. Your eyes were killer, girl. Your eyes were killer. Yeah, the eyes. I You loved are the it. Next best level. thing in Brahmastra, Moni Roy. One of the best We things in love you. Brahmastra were Moni's eyes. Yeah. So Yeah. good. I loved it. Okay, He was Odie, is amazing. Absi hallucinating or are you purple? I change my colors like Nagin does. Yeah. Pepsi. Git ki You tarah. just need to be with me Not once. Nagin. I'll take care of your heart. Okay, guys, so that is it for us today. I hope you like talking about Brahmastra. Please, हमारे channel को like करें. There's almost 800 people here, तो like बनते हैं, subscriptions भी बनते हैं, so subscribe. And stay tuned for our Coffee with Karan review that will be coming out. And we have a couple new kind of concept videos that are also going to be coming out soon. And also, अगर आपने नहीं देखा, तो हमने remix versus old का भी video डाला है where we discuss if we like the remixed version or we like the original version. वो भी देखो जाके. And what else, guys? And we will be back tomorrow Book. with Khatro. Yes. Saturday, Sunday, Khatron, and Monday, Jhalak. Okay. Yeah. So stay tuned, Guys, guys. please like Bol and bum. subscribe and love. And Yes. celebrate Bollywood. Yes. Please Yes. like.